the importance of these 5 visuals. They tell you the story of how similar in gundagardi, in hooliganism, and taking law in their own hand are the 3 Senas. The Maharashtra Navnirman Sena, Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray, and Shiv Sena, the Shinde faction. All of them are cut from the same cloth. They only speak the language of violence, and that is exactly what has been displayed in all these incidents. And Sena MLA, Shiv Sena Shinde, ruling party there, beating up a man because he did not like the quality of the food, even if the food was the worst. Is this how you behave? Is this the example that you set, being a lawmaker? Then, of course, MNS at it again. This is extortion, MNS style, vandalizing a toll booth. And just a few days back, we've been continuously on NDTV putting focus on the gundagardi, the hooliganism of the MNS workers, where one half-naked, drunk MNS brat, in fact, goes on and unloads on a woman completely, with his abusive language and threats. On the other hand, if you thought Sena UBT was any different, a former MP, in his office, people are brought in, slapped, threatened. The former MP Saab, because he is from the political party Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray, sits there, chills, and it all started with this language chauvinism which was being pushed down people's throat literally by slapping a shopkeeper in Mumbai. And that is exactly why I'm saying this is a Panchanama. All these political parties, no matter what they say, they are absolutely zero difference in them. They are all the same. Let's start, first of all, with our top focus this evening. This man is an MLA, ruling party MLA. A ruling party MLA, Mr. Gaikwad, was in the MLA's hostel, ordered food, did not like it, and this is what he does. Comes back with the packet, asks for the waiter, starts slapping him. That was the first slap, one more slap, a punch, and then he pushes him away. This was an MLA, drunk on par at 2 levels. A, he belongs to the Shiv Sena Shinde faction. He is an Amdar, the member of Legislative Assembly of Maharashtra, elected member. And his party is a partner in the government. He thought he will teach people lesson, his style. He will go and beat people. His rowdies stand around him. Where all of them egging, beating up the people, and all that they did. But this man, the problem was that he did not like the quality of the food, even if the food was the most worst food that was served to the MLA. So what? Who are you to slap people? You could have gone, complained to the police. This was in the MLA's hostel. Complain to the government. Get the contractor changed. But you think that you are above law, and that is why you can come out. In fact, the MLA, when confronted by NDTV, said that he did nothing wrong. And he knows he'll get away because he is Amdar, MLA, a man with power. Listen in. विधायक है, वो भी रूलिंग पार्टी के विधायक है, इस तरीके से हाथ उठाना कितना जायज लगता है आपको? मैं विधायक भी हूँ और मैं योद्धा भी हूँ। जब सब भाषा में समझाने के बाद में कोई समझता नहीं है तो बाला साहब ठाकरे जी ने हमको भाषा सिखाई भी है, जिसका इस्तेमाल मैंने किया है। वो वीडियो में खास तौर से दिख रहा है आपने घूसों का भी उपयोग किया, झापट का भी उपयोग किया, लात भी मारने की कोशिश की। ऐसे में सर कंप्लेन कर सकते हैं आप? मैंने कंप्लेंट किया, 4 बार किया, इसलिए मेरी जान मेरी सटक गई। मैं जूडो चैंपियन हूँ, मैं जिम्नास्टिक चैंपियन हूँ, मैं कराटे चैंपियन हूँ, मैं कुश्ती चैंपियन हूँ, तलवारबाजी, दांडपट्टा, कुश्ती का सब मैं चैंपियन हूँ, इसलिए मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ। सर आप विधायक हैं, आपको लोग देखते हैं, आपसे लोग इंस्पायर होते हैं। ऐसे अगर आप देखें इस तरीके के कृत्य करेंगे तो लोग भी प्रोवोक्ट हो जाएंगे, कहीं वहाँ भी हिंसा होगी, क्योंकि एक तरीका होता है सर। जब प्रशासन काम करता नहीं है, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी, तो जनता क्या करेगी? वो तो कायदा हाथ में लेगी ना। अब एक आमदार कंप्लेंट करता है और उसके अगर कोई दखल लेता नहीं है, उसमें कोई कार्रवाई करता नहीं है, तो ये आमदार क्या करेगा? खुद की जान देगा? बार बार बोलेगा नहीं अभी इतना तुमने सड़ा हुआ दिया, कल कीड़े पड़े हुआ खाना हमको खिला, ऐसा बोलेगा आमदार? मैं इतना गांधीवादी नहीं हूँ मैं। आखिरकार जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विधायक होने के नाते एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
आपको थोड़ा भी मलाल है कि इस तरीके से नहीं होता? या कोई मलाल नहीं है, मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे कोई ये विषय में ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैंने कोई गलत किया है। अच्छा, इसकी आप कहाँ इसको उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय भी है? अभी हम विधानसभा में अध्यक्ष महोदय जी से पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन में बात रखने का प्रयास करेंगे। कनेक्टिंग मिनिस्टर जो है हमारे भुजबल साहब, उनको भी हम बताएंगे और फूड एंड ड्रग्स को भी हम कंप्लीट करने का शिवसेना स्टाइल की जो आपने बात की है वो हमने देखा, लेकिन इस समय जो वातावरण है पूरे महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में, वो स्टाइल मनसे और उभाटागढ़ भी करते हुए नजर आ रहा है सड़कों पर। कैसे देखते हो उसे? तो उनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। वो ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है ये महाराष्ट्र के हित का नहीं है। I'm a judo champion. I'm a champion in various martial arts, and hence I will use it on a hapless worker in a canteen. This man says that if his complaints are not listened to, people will take law in their own hands. So should the chief minister and the home minister also, because Mr. Fadnavis is also the home minister, should the deputy chief minister to whose party he belongs to, should they shut the police department? And Mr. Amdar, the judo champion, should be given the charge of solving all the problems in Maharashtra by taking the law in his own hand. Why shouldn't he be booked, and he should be by now, in fact, behind bars? That's the big question. Just because you're an MLA of a ruling party, you can get away with whatever you want, saying whatever you want, doing exactly what you want. It has become a big political issue. Let's listen in. यातनं सगळ्या आमदारांबद्दल लोकांमध्ये भावना चुकीची जाते. आपण कुठेतरी सत्तेचा गैरवापर करतो किंवा आपण सगळे आमदार म्हणून आपलं कंडक्ट योग्य नाही, अशा प्रकारचं लोकांमध्ये या संदर्भातली भावना जाते. आणि म्हणून निश्चितपणे मला असं वाटतं की अतिशय गंभीर बाब आहे. आपण आणि माननीय अध्यक्ष या दोघांनी याचा कॉग्निझन्स घ्यावा आणि या संदर्भात काय पुढील कारवाई करायची ते आपण करावी. आमदार संजय गायकवाड यांनी आमदार निवासमधील निकृष्ट दर्जाच्या जेवणाबद्दल तक्रार केली नाही, तर त्यांना स्वतःच त्याचा अनुभव आला आणि जेवल्यानंतर जेवतानाच त्यांना उल्टी झाली. उल्टी हो गया उनको, वोमिट, तो वॉमिटिंग हो गया और इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर वो मारपीट की है. उसका मैं समर्थन नहीं करूँगा और हम लोक प्रतिनिधि है, विधायक है, तो हमारी जिम्मेदारी है. कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे पास अधिकार है. तो अगर जिधर गलत होता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मारपीट करना ये उचित नहीं है. और संजय गायकवाड़ को मैं निश्चित रूप से इसके बारे में ज़रूर उसको मैंने कहा भी है कि ऐसा करना उचित नहीं है. मैंने कहा है ऐसा करना ठीक नहीं है, but when will the action be taken? It seems like there is in fact a race going on between MNS and the Shiv Senas, both factions, to try and outdo each other in who can portray more hooliganism, who can act as a bigger gunda, mawali, a goon, a thug in Maharashtra. Their MLAs, their workers are in a race as far as the state is concerned. Just take a look at these visuals. If you thought, there will be a day, today at least, one day where MNS would be out of the picture in their extortionism, gundagardi, hooliganism, well, you thought it wrong. This is a toll plaza where the MNS workers, and chaos erupted at this toll plaza in Maharashtra's Washim, when Maharashtra Navnirman Sena, MNS, their workers went on a rampage and damaged several booths. A viral video of the destruction shows a couple of workers breaking glass panes at the toll plaza. According to the party district president, Raju Patil Kidse, the road after the toll plaza was not ready to be used, but the booth was already functioning and taking toll from the people. I can understand the grouse, but does that mean that tomorrow if I am passing through this toll plaza, I should take out a bat and start bashing up the people there, hitting out at the window panes, breaking it all? Should all of us in this country start following the MNS fashion? Then what is the rule of law? Where does this stop? Why isn't strict action being taken against these senas? Because one after another, incidents do come in, and all we see is the politicians, the people in power, making excuses.
And that is exactly why I say all of them have been cut from the same cloth. They only understand the language of violence. And this is the example that they are setting up for people across the country. If something doesn't work, take the law in your own hand and say, this is our style. MNS ka style hai Shiv Sena, Shinde ka style hai Shiv Sena, UBT ka style hai. And let's, in fact, at this moment, let's listen into what the police had to say on this incident. कल शाम को वाशिम रूरल पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में तोनगांव टोल नाके पे 3 आरोपियों ने वहाँ के टोल मैनेजर से पैसे छीन लिए 5,000 रुपये और साथ ही में वहाँ के टोल की काफ़ी तोड़फोड़ भी की है। इन लोगों ने कुछ दिन पहले टोल मैनेजर से पैसे की डिमांड भी की थी। उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है रेलेवेंट सेक्शंस के अंडर। और उन आरोपियों का नाम है गजानन वैरागड़े जो मनसे के वाहतुक शाखा जिलाध्यक्ष है, उमेश टोलमारे जो वाहतुक शहराध्यक्ष है और सीताराम चवड़े। इन तीनों को अरेस्ट करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई है और उनका लोकेशन हम रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं। इन पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। There is, as I said, a competitive thuggery which is going on in Maharashtra, and it is being called our own style. And I just want to, rate examples, because when this happened, when MNS does something, Shiv Sena, the Shinde faction comes out and condemns them, BJP condemns them, but when their own do something, nobody speaks about it. 5 instances recently. Let's just roll it back. Just roll it back and go to the first one. Let's just, we'll once again roll it back and we'll start with this slap, which all started with the MNS workers assaulting a shopkeeper for not speaking the Marathi language. Marathi and Maharashtra top priority, and taking the law is also a bigger priority. Thuggery number 2, drunk son of an MNS leader goes out and abuses a woman. Nobody says anything to him. Thuggery number 3, Sena UBT leader slaps people gets them in his office, gets them beaten up, asks them to apologize. Number 4, Shiv Sena MLA, now going across, beating up people in the canteen because the dal which was served to him, he did not like it. And number 5, if I can very quickly go across and tell you, is the incident that we just spoke about, the MNS people vandalizing the poll booth. Do you think that if you or I, for any grievance, if we did something like this, you and I would be allowed to, in fact, come and give interviews and speak in the language that these people have been? But that's the big question. And for how long people of Maharashtra in this country should bear the witness of such people? How long should we be burdened by such public representatives? That's the big question, because the country is fed up of such people. The people of Maharashtra, on whose name all these acts are conducted, are also fed up. And it's not something that I'm making up. Listen in, ladies and gentlemen. We spoke to people of Maharashtra. The very Marathi pride and the Marathi manus that these people claim to be representing are absolutely fed up of this gundagardi. This is where India speaks on NDTV. Take a look. विधायक द्वारा जब दाल सही नहीं परोसी गई तो कैंटीन के आदमी की पिटाई कर दी गई, ये आपको कितना सही लगता है? लेकिन पीटना चाहिए ऐसे? नहीं, गलत बात है। गलत बात। मतलब क्या कर सकते हैं? मैम उसके लिए आर्गुमेंट कर सकते हैं, पैसे बिल के लिए हो सकते हैं, पर मारना पीटना गलत है जी। मारपीट बहुत ज्यादा होने लग गई है महाराष्ट्र में, आपको ऐसा लगता है? हाँ मैम, छोटी छोटी बातों पे होते रहती है। मजा पाओ। कई बार ऐसा होता है कि देखिए आपका खाना सही नहीं होता, तो आप क्या मारपीट पर उतर जाएंगे सीधा इनके साथ? नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इंसान से ही गलती होता है। हाँ, तो कुछ जिस मिस्टेक रहेगा तो उनको बताएंगे भाई ये मिस्टेक है, तो उसको सुधार करेंगे। जैसा व्यवहार किया जाए वैसा, लेकिन अगर सामने वाला शांत है, चुपचाप आपको सॉरी बोल रहा हो, शांत समझ होगा। ऐसा खाने पीने में ऐसा नहीं होना चाहिए ना, गड़बड़ी खाने पीने का मामला ये समझाऊंगा उसको 1-2 बार। एक नेता है शिवसेना के, वो सीधा मारपीट पर उतर गए, कैंटीन वाले को बहुत जोर का मारने लगे क्या। लेकिन अभी उसके आगे पहले कुछ हुआ होगा ना, अभी क्यों मारा है? अभी कोई नेता किसी के ऊपर हाथ उठा तो कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा ना, वो भी तो मालूम होना मुझे ना आप लोगों को। तो ऐसा कभी हुआ है कि कुछ कंप्लेंट आई हो दाल को लेकर? नहीं, हमारे इधर कंप्लेंट नहीं। एक नेता है संजय गायकवाड़, उन्होंने क्या किया है कि उनकी दाल खराब थी, तो जैसे कैंटीन में काम करने वाले लड़के होते हैं उनसे मारपीट कर ली, बहुत मारा है उन्हें।
अपने इधर खराब दाल सीधा फेंक देते हैं, वेस्ट होता है वो हटा देते हैं। लेकिन गलत है, जब अगर सपोज कोई आपके पास खराबी आए खाने को लेकर तो आप लोग क्या करते हैं? वो उस्ताद को रिएक्शन करेगा, उसको बोलेगा ऐसा क्या क्या कैसा हुआ, उसको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन मारपीट करना ये सही है? नहीं, मेरे को सही नहीं लगता। People are fed up of the violence in their name, in the name of their language, pride, so and so forth. And a message should be sent across to these leaders. We are waiting for the government of Maharashtra, the police of Maharashtra, to act, to at least get the courage and act against this MLA and all these so-called political workers, which are goons basically, masquerading as political workers. Strict action needs to be taken against them.